Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start our chapter number 4, that is acid, bases and salts. Students, in this chapter we will deal with the acids. That what are acids, what are bases and salts. We will understand these and then we will deal with the natural indicators around us. That how we can find the given solution is acid or base. In this natural indicator, we will deal with the litmus. We will study litmus, which is a natural dye. Turmeric, we can say it is another indicator. China rose, it's a natural indicator. We will deal with the neutralization. What is neutralization? We will understand the definition and how the neutralization help us in everyday life, where we can see the neutralization reaction occur in our daily life. Then we will see indigestion, how indigestion, and when the indigestion is there, then acids and this bases help us. Then the next is ant bite. When ant bite, then what type of acids they inject in the body. Then last we will see the soil treatment. So without any delay, let's continue our chapter, that is acids, bases and salts. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, copper salt, common salt, sugar and vinegar. We use different type of substance. Do they have the same taste? What do you think? Lemon, tamarind, and sugar. Lemon and sugar, they are totally different apart. Let us recall the taste of some edible substances listed in the table. We will see some substance and we will see the taste of these substances. If you have not tasted any of these substances, taste it now and enter the result. Now, what you have to do, if you think that these substances you have not tasted, you go and then taste it and then write down the taste. First is lemon juice. So, what do you find? Lemon juice taste is sour. Then, orange juice, sour. Vinegar, sour. Curd, that is also sour. Tamarind, sour. What about sugar? Sugar is sweet, right? Common salt, it is salty. Now, here the another substance, here amla. Amla is sour in taste. Then baking soda, it is bitter in taste. कड़वा होता है. Grapes, it's a sour in taste. Unripe mango, sour in taste. And then cucumber. Cucumber कैसा होता है? It is bitter in taste, right? Now, listen and understand it. Do not taste anything unless asked to do so. Don't take each and every substance in your mouth, okay? You need to ask your parents about it and do not touch anything unless asked to do so. And don't touch it also. So, here you find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet, and some taste salty also. In the above examples, we see there are the different type of tastes. They that were sour, bitter, sweet, and salty. Now here curd, lemon juice, orange juice, vinegar. They taste sour, right? They all were sour. These substances taste sour because they contain acids. What we are thinking that when we see in the taste that the substances are sour, we conclude on this that the substance which are sour, they contain acids. उनमें acids होता है. The chemical nature of such substance is acidic, and we say the nature is acidic. Now, the word acid comes from the Latin word that is acer, which means sour. अभी एसिडिक जो वर्ड था वो कहाँ से आया था? लैटिन वर्ड से आया था और उसका मतलब क्या होता है? सॉर. सो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द नेम इट्स एसिड, राइट? द एसिड इन द सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स. अब लेमन दैट इज नेचुरल, राइट? हमने तो नहीं बनाया उसको. सो इट इज नेचुरली अकरिंग एंड दिस एसिड इन इट, that is also natural, right? Like the same orange juice, vinegar, right? So here acid we can say
Any substance that solution tastes sour changes the color of certain indicator. हमने कहा कोई भी सब्सटेंस जो कैसा होगा, खट्टा होगा, राइट, और जो कलर को चेंज कर दे. हाउ? दैट रेडन्स ब्लू लिटमस पेपर. ब्लू लिटमस पेपर को जो रेड कलर का कर दे. रिएक्ट एट इन वाटर विद सम मेटल, जो मेटल के साथ रिएक्ट करे. फॉर एग्जाम्पल आयरन टू लिबरेट हाइड्रोजन. रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट, जो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके, सॉरी, बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना दे. एंड प्रमोट सर्टेन केमिकल रिएक्शन, acid catalyst. So this is what? Acid, right? Now, what about baking soda? How you think about it? What is baking soda? Does it also taste sour? क्या वो खट्टा होता है? If not, what is its taste? तो आप देखते हैं कि वो अगर sour नहीं होता तो उसका टेस्ट कैसा होता है? It is bitter in taste. It does not taste sour. It means that it has no acid. अगर वो sour नहीं है तो इसका मतलब वो acid नहीं होगा. It is bitter. What is the taste of baking soda? It is bitter. If you rub its solution between the fingers, it feels soppy. जब आप क्या करते हो, उसको rub करते हो, तो you feel soppy, right? Generally, substances like these, which are bitter in taste and feel soppy on touching, are known as base. As we were thinking, as we conclude on it, that the substances which are sour, they are acids. Same as it is, we have given a statement here that the substance which are bitter in taste and feel soppy, right? Two things we keep in mind कि जो खट्टे, जो कड़वे होंगे और जो टच करने पर सॉपी टच देंगे, उन सब्सटेंसेस को हमने क्या कहा? बेसिस का. The nature of such substance is said to be basic. We say that the nature is basic, right? Now, if we cannot taste every substance, how do we find its nature? Is it possible to taste each and every substance? Maybe some things will be very harmful for you, right? तो वो अगर आपके लिए हार्म करेंगी, इसका मतलब हम सब चीजों को टेस्ट नहीं कर सकते. और अगर टेस्ट नहीं कर सकते, so how we find that these are acids or bases? So special type of substances are used to test whether a substance is acids or bases. So these substances are known as indicators. We say ऐसे substance जो टेस्ट करने पर एसिड्स और बेस हो, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर, राइट? सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए, टेस्ट नहीं, टेस्ट तो वी कैन डू, बट टेस्ट जब करके हम पता लगा सकें कि ये एसिड होगा या बेस होगा, उसको हमने क्या कहा? इंडिकेटर. जो इंडिकेट करे, राइट? द इंडिकेटर change their color when added to a solution containing an acid or base. For example, if I have lemon juice, right? lemon juice को बिना टेस्ट करे मुझे चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? इन इंडिकेटर्स को उसके अंदर डाल देंगे, right? We put this indicator, we add the indicator into the solution, and then we can find out according to the color whether the given is acid or base. For example, we have turmeric, litmus, China rose petal. Are these some example of naturally occurring indicator? Now, here acids and bases. Do you know here name of acid? It is given acetic acid. So acetic acid, it is found in vinegar. Formic acid, it is found in ants sting. जब चींटी काटती है तो कौन सा एसिड देती है? इट्स फॉर्मिक एसिड. देन सिट्रिक एसिड, सिट्रस फूड, जो सिट्रस खट्टे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, राइट? लैक्टिक एसिड, दैट इज फाउंड इन अ कर्ड. ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज फाउंड इन अ spinach. Then ascorbic acid, it is in amla, citrus fruit. Then tartaric acid in tamarind, grapes, unripe mangoes, etc. So these are some acids. These are found in these substances. You need to learn it so that you can continue it, right? These type of questions usually come in your exam. Now here, calcium hydroxide, it is found in lime water. These are the bases, right? Ammonium hydroxide, it is found in window cleaner. Sodium hydroxide, potassium hydroxide, it is found in the soap.
Magnesium hydroxide, it is found in the milk of magnesia, right? Now here we will deal with the natural indicator. What are the natural indicator around us? So first is litmus, a natural dye, right? We use litmus as to find whether the given solution is acid or base, and it is a natural dye, right? The most commonly used natural indicator, that is litmus. It is extracted from lichen. कहाँ से extract किया? Lichen से. This you can see in the figure. It is a mauve purple color in the distilled water. ये क्या करता है? Purple color देता है. When it is added in acid, जब इसको acid में add किया जाता है, understand it students? When it is added, then it turn red, and when added to base, जब इसको base में add किया जाता है, it turn blue, right? एसिड्स में इसका कलर कैसा हो जाता है? रेड कलर. ओके, लर्न इट. एसिड्स इट टर्न रेड एंड बेसिक इट टर्न ब्लू. इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन. किसकी फॉर्म में होता है? सॉल्यूशन की फॉर्म में, और इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप्स ऑफ अ पेपर known as litmus paper. क्या बोलते हैं उसको? litmus paper बोलते हैं, right? Now generally it is available as a red or blue litmus paper. अभी हमने पढ़ा था कि अगर blue litmus paper red हो जाए तो that is acidic, right? तो it means यहाँ पर हम क्या करते हैं, litmus paper होते हैं उनको भी particular color दिया हुआ है. कौन कौन सा? red and blue color. Now the another one, that is turmeric. So this is what about natural dye, that is litmus, right? अब याद रखें the important point, extracted from lichen. कलर इसका क्या होता है? पर्पल. जैसे आप उसको क्या करते हैं? एसिडिक में डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और वैसे ये क्या हो जाएगा? ब्लू. डिस्टिल वाटर में क्या हो जाएगा? पर्पल कलर, राइट? नाउ हियर द अनदर इंडिकेटर, दैट इज टर्मरिक, राइट? टर्मरिक इज द अनदर इंडिकेटर. सो इट इज यूज्ड एज ए नेचुरल डाई. कैसे यूज होता है? नेचुरल डाई की तरह, नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज होता है. इट इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू डिटरमाइन इज एसिडिटी एंड बेसिसिटी. हमने यही पढ़ा कि हम इसको यूज कर सकते हैं. कैसे यूज कर सकते हैं? आप बता सकते हो कि सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक. द टर्मरिक इज एसिडिक इन नेचर. टर्मरिक कैसा होता है? एसिडिक होता है, राइट? एंड इट्स येलो इन कलर. कैसा होता है? येलो कलर का होता है. यू ऑल नो, हल्दी आपने देखी होगी. When turmeric paste is added to the basic, अगर बेस में जाएगा तो येलो कलर ही रहेगा, राइट? सॉरी, it added to the basic solution, the yellow color changes to red. Understand it? Basic में, here I want to specify it again. Here what I am telling, acid में इसका कलर क्या होगा? येलो, राइट? बट बेस में इसका कलर क्या हो जाएगा? रेड कलर. Acids, it remain as it is, no change in the color. And basic, it changes to red. कभी आपने देखा है कि आपकी मदर अगर मान लो कपड़े धोते हैं तो when we apply soap on it, तो जो हल्दी का रंग होगा किसी भी कपड़े के ऊपर, so it changes to red, रेड कलर का हो जाता है. Why it is so? क्योंकि वहां पर क्या हो गया? बेस ने रिएक्ट किया, राइट? नाउ हियर natural indicator around us, that is China rose. Another one, that is China rose. China rose convert acidic solution to dark pink. China rose acidic solution को dark pink color में change करता है, right? When it is added, it changes to dark pink. Basic solution to green color, right? Base किस में change हो जाता है? Green में. And has a no color change for the neutral solutions. और neutral के लिए ये सॉरी, कोई भी अगर मान लो ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें ना तो एसिड है ना ही बेस है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं, राइट? और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज नहीं होता. सो चाइना रोज इज अ नेचुरल इंडिकेटर एंड यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसिस. सो जस्ट लर्न इट. एसिड में कलर कैसा होगा? डार्क पिंक. बेसिक सॉल्यूशन में कैसा होगा? ग्रीन कलर. एंड जो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसमें कलर इसका चेंज नहीं होगा. नाउ litmus, a natural indicator. The most commonly used natural indicator, that is litmus. It is extracted from lichen. This we have learned, this we have revised. Here now another is synthetic indicators. What are synthetic indicators? These above one, they were natural, naturally जो occurring कर रहे थे, right? जैसे turmeric हमें तो नहीं बनाना पड़ता, naturally occur करता है.
बट वी हैव सम सिंथेटिक जो मैन मेड होते हैं. तो मैन मेड इंडिकेटर्स में सबसे पहले क्या आएगा? मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऑरेंज कलर का ही रहता है, बट इन द एसिड इट टर्न्स टू रेड एंड बेस इट टर्न्स टू येलो. नाउ अनदर वन दैट इज थाइमोल ब्लू. इट न्यूट्रल सॉल्यूशन में येलो, एसिड्स में ये रहेगा रेड, और बेसिस में क्या रहेगा? ये ब्लू कलर. नाउ अनदर वन that is very important. What is neutralization? What do you mean by neutralization reaction? A neutralization reaction can be defined as a chemical reaction in which an acid and base quantitatively react together to form a salt. Students, when in the figure you can see, when we mix these two, acid and base, then we get a solution. और वो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? सॉल्ट होता है. एंड दैट नलीफाई द रिएक्शन. जो भी एसिड और बेस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को नलीफाई कर देता है, जीरो बना देता है, राइट. तो इसका मतलब वो क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट बना देता है. और साथ में क्या देता है? ये वाटर एज अ प्रोडक्ट. And utilization reaction, there is a combination of, एक तरह से combination हो रहा है. किसका combination होता है? H plus ion. Where this H plus ion comes? It from acid. And OH ion, that is from water, right? And neutralization reaction is generally an acid based neutralization reaction. The pH of neutralized solution depend on, जो pH होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है रिएक्टेंट की. नाउ in neutralization, in chemistry, pH is a scale. What is pH? It is used to specify the acidity or basicity. For example, if I give a solution and if I say it is acid, so how much acid it is? कितना acidity है उसके अंदर, right? कितनी basicity है? So that is given by pH scale. So here you can see, you can observe the colors, right? पीएच स्केल में कलर्स ऑब्जर्व करते हैं. अगर वो डार्क रेड होता है, सो दैट इज गैस्ट्रिक एसिड, मींस बहुत ज्यादा एसिड है. नाउ सेकेंड, लेस एसिड, लेस लेस लेस, अप टू दिस 7 इट बिकम्स न्यूट्रल, राइट. उसके बाद बेसिसिटी इंक्रीज होनी शुरू होती है. एट 14 इट इज द मोर बेसिक, मींस द सबसे ज्यादा बेसिक किस पॉइंट पर होगा? 14 पर. और सबसे कम एसिड कब होगा? बेस पर, 14 पर ही होगा, राइट. 1 पर सबसे ज्यादा एसिड होता है और सबसे कम बेस होता है. 7 पे इट इज न्यूट्रल. नाउ हियर वी हैव phenolphthalein. Phenolphthalein is a colorless and weak acid that is commonly used to signify the end point of titration as an indicator in titration experiment. Students, you can use phenolphthalein. फिनोफ्थलीन होता क्या है? एक कलरलेस सब्सटेंस होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, एंड अ वीक एसिड, राइट, जो इंडिकेटर्स में काम करता है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर यू कैन सी न्यूट्रल रहेगा फिनोफ्थलीन, इट रिमेन सेम. अगर यहाँ पर कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो एसिटीज रहेगा. एसिड होगा, इट रिमेन सेम. बट एज यू आर टेकिंग द बेस, then it turns to pink color, right? तो वो फिनोफ्थलीन किसको चेक करता है? बेसिस को चेक कर सकता है, right? फिनोफ्थलीन is a synthetic indicator. It is colorless in acid and we say that neutral solution and neutral condition. It is colorless in acid and neutral, right? Right? As it is रहेगा. Now application of neutralization reaction. So first we can use it in titration methods. What do you mean by titration? The method of a chemical titration is employed to find unknown concentration of acid or bases by finding their neutralization point. We can find out the neutralization point of these substances. To find the point where the neutralization happen, we use the pH indicator और pH meter. किस चीज का यूज करते हैं? pH indicator का. With the help of a simple stoichiometric calculation and knowledge of the volume and molarity of a known substance, the molarity of unknown particles can be found. So from this we can find out the volume, molarity, right? Molarity of unknown and known both. Then we can use it in a wastewater treatment. Most of the waste that comes in the form of industrial effluent have their fair share of toxicity.
अब देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस को एनवायरमेंट में देते हैं। दस वी नीड टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिसिटी। तो उनकी टॉक्सिसिटी को हमें क्या करना पड़ता है, न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, ताकि वो हमारे एनवायरमेंट को हार्म ना कर सकें। सो फॉर दिस वी कैन यूज दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Based on the application, different chemicals are used. For example, we use sodium bicarbonate, magnesium hydroxide, calcium oxide, and calcium carbonate also. Now, the another method, that is nanomaterial synthesis. To facilitate the chemical reduction of metal precursor, the heat of neutralization reaction is used. क्या किया जाता है, किसी भी मेटल को फैसिलिटेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नैनो मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं. Very important, that is in our digestive system में when food is moved between our stomach and intestine, the food need to be neutralized. खाना जब हमारे पेट में जाएगा तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. बट फॉर द न्यूट्रिएंट टू बी absorbed थ्रू द intestine wall, an alkaline environment is required, right? तो उसके लिए क्या किया जाता है, एंटा एसिड बाइकार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड टू क्रिएट दिस फेवरेबल कंडीशन. हमारी बॉडी क्या करती है, एंटा एसिड प्रोड्यूस करती है, राइट? नाउ हेयर कंट्रोलिंग सॉइल पीएच. For optimal plant growth in any soil, there are certain conditions which are required. ऐसा नहीं होता कि जो सॉइल होती है वो एसिड ही रहे, वो बेसिक रहे. तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कंडीशंस जो है, रिक्वायर्ड कंडीशंस है, वो उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है. So some example of materials mixed in the soil to neutralize it from the acidity, that is calcium carbonate. क्या डाला जाता है उनमें, लाइमस्टोन. और दूसरा क्या डाला जाता है इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक्ड लाइम, राइट? नाउ हियर this is neutralization in everyday life. We will deal in this in the another video. So if you like the video, please share it with your friends. Thank you. Bye bye.